Okay guys, so in this session we are going to understand about the constraints. Okay, so constraint stands for the restrictions that can be applied over the table, and you can see what are the different constraints that we are going to see. So in this session we will see how your not null constraint will work and also the concepts of about the unique constraint. So ये दो constraints हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ये कैसे काम करते हैं ये इस सेशन में हम अभी देखने वाले हैं. So let's move. For that I'll create a table into my database, but before that let me initiate my database, that is use Sachin, and in this what are the existing tables that I can see with the help of command, that is show tables. Okay, so these are the tables already I have prepared. Now I will create one more new table to explain the constraints. So I'll create the table which is stud underscore info, right? So stud info, and in this I will include three different attributes, that is the roll number which is of integer type. I'll mention the size 3. Then I'll use name which is of type varchar and size will take 10, and one more attribute I'll take city, again it is of varchar type and its size will be 15, like this. Now with this command we can create a ordinary table, but the thing is we are going to apply the constraints on the table, right? So constraints अगर apply करने ना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. So whatever roll number is there, no, so for the roll number I am going to apply the constraint, that is not null. बस इतना कर दो आप. We need to write the not null in front of the attribute and the constraint will be applied to the table. Okay, let us see how it works. So your table is created. We can see the table with the command description, and I'll put the name stud info. So you can see here now in front of roll number in the null section it says no, that means it won't accept the null values to the roll number. Okay, we will verify, and for that I'll execute the insert command. So insert into stud info. Now if I wanted to insert null value, then in that case I have to enter the values for some specific attributes only. So I will use the attributes like name and city. Okay, so here I am going to enter the value for name and city only, right? So after that I'll write the values. So obviously यहाँ पे क्या हो जाएगा, if I am entering the value for name and city तो रोल नंबर को नल वैल्यू असाइन होती है बाय डिफॉल्ट, बट वी हैव अप्लाइड द कंस्ट्रेंट. सो चेक कर रहे हैं हम कि रियली ये एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा. ओके, सो वैल्यूज, सो आई विल यूज द वैल्यू हियर नाउ श्रीनाथ and the city is Mumbai. Okay, enter. What error it shows? It shows the field roll number doesn't have a default value, means it won't accept the null values, right? तो इसको अगर आपको करेक्ट करना है ना, तो what we need to do, we need to correct this query of insert, like here I need to mention the roll number also, roll number and comma, and here even we need to give the value for the roll number. I'll give 101, and now whether it will accept the null value. Yes, actually it is not null value, we have entered something instead of null. तो यहाँ पे आपके टेबल में वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, बट इफ यू हैव अप्लाइड द नॉट नल कंस्ट्रेंट देन इट वोंट एक्सेप्ट एनी नल वैल्यूज टू द टेबल. क्लियर? सो दिस इज हाउ योर टेबल विल or your null constraint will work. Now we'll go to understand the another constraint, that is not null, sorry, unique constraint, right? तो ये यूनिक कैसे काम करता है? नाउ आई विल अप्लाई दिस यूनिक कंस्ट्रेंट फॉर द नेम एट्रीब्यूट. ओके, तो अगर एग्जिस्टिंग टेबल में मुझे कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं तो आई नीड टू अल्टर दैट टेबल, नो, विद द मॉडिफाइज. सो आई विल राइट अल्टर table
स्टूड इन्फो. गाइज प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं विच इज़ फॉर द नेम एट्रीब्यूट, और वो कंस्ट्रेंट कौन सा है हमारा, यूनिक. ओके, सो अल्टर टेबल स्टूड इन्फो, देन आई विल राइट मॉडिफाई. कौन से एट्रीब्यूट्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज नेम, उसका टाइप वैरक्यर है, उसकी साइज 10 है, एंड आफ्टर दैट आई विल राइट only keyword which is unique and put a semicolon. Press enter. You can see here your table has been altered. Okay, and we can see the description of this table, stud info. So you will find in front of name, in the key section you will find the keyword unique. That means the unique constraint is been applied for the name. That means it won't accept the duplicate values for the name. So this way your unique constraint will work. Again we will try with the help of insert command. So if I write insert into, or we can execute the previous command only. So insert into student info, roll number, name, city and values. तो यहाँ पे देखो नेम को हम सेम ही रखते हैं और बाकी के एट्रीब्यूट्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं. देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं. सो 126 एंड आई विल चेंज द सिटी ऑल्सो. सो सिटी को हम यहाँ पे चेंज करते हैं पुणे. ओके, सो अगेन इट विल शो एरर बिकॉज इट सेज द डुप्लीकेट एंट्री फॉर श्रीनाथ फॉर अ की स्टूड इन्फो नेम. दैट मीन्स unique constraint has been successfully applied, right? So this is about the not null and unique constraints.